Hello everyone. So our topic for today is chapter number 11, Struggle for Equality. And the progress of modern India, struggle for political freedom was important. The struggle was based on broad philosophy of man's emancipation. Therefore, in the course of the struggle, along with political dependence, there was opposition to things like feudalism, social inequality, economic exploitation, right? कि कैसे हो गया था अभी मॉडर्न इंडिया का तो प्रोग्रेस चल ही रहा था बट एट द सेम टाइम पीपल नीडेड पॉलिटिकल फ्रीडम दे नीडेड फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स एंड एट द सेम टाइम दे ऑल्सो वांटेड टू एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स लाइक इनइक्वालिटी हो गया इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो गया द वे द ब्रिटिशर्स वॉज लूटिंग फार्मर्स एंड नॉर्मल पीपल इकोनॉमिकली गिविंग मेंटल प्रेशर एंड एवरीथिंग सो नाउ द स्ट्रगल वॉज वे इम्पॉर्टेंट लाइक एक पॉलिटिकल फ्रीडम का जो स्ट्रगल था वो इम्पॉर्टेंट हो गया था लाइक फ्रीडम द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट बिल्ड अप वेरियस सोशल ग्रुप्स सच एज फार्मर्स वर्कर्स वुमेन दलित्स एक्सेट्रा एज वेल एज द स्ट्रीम ऑफ सोशलिज्म गिविंग इम्पॉर्टेंस टू इक्वालिटी प्रूव्स टू बी अ सिग्निफिकेंट ओके कि पॉलिटिकल फ्रीडम तो लोगों को चाहिए ही था बट एट द सेम टाइम पीपल टू वांटेड इक्वालिटी दैट देयर शुड बी इक्वालिटी नो मैटर व्हाट इन द बेसिस ऑफ कास्ट क्रीड एनीथिंग बट बेसिकली देयर शुड बी इक्वालिटी एंड दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स लोग ग्रुप्स बनाने लगे देयर वर ग्रुप्स मेड फ्रॉम देयर वर ग्रुप्स मेड विच इंक्लूड्स वेरियस मेंस वुमेन्स दलित्स एवरीवन फार्मर्स एवरीवन ओके without realizing its contribution, we will not be able to understand the development process of modern India. Therefore, let us study some of these movements. So, which were the equality movements which were being created? वो हम लोग देखेंगे. So, the first one was peasant movement. The Indian farmers had to suffer due to the ill effects of British economic policy. The British government used to protect the landlords and money lenders. They gave unjust treatment to the farmers. पहले से हम लोग देखते आ रहे थे that always farmers they were सेट टू पेड एक्स्ट्रा टैक्स नो मैटर वॉट क्रॉप ग्रो हुआ है नहीं हुआ है आपका प्रोडक्शन अच्छा हुआ है नहीं हुआ है बट यू शुड पे टैक्स एंड वॉट ब्रिटिशर्स वॉट ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज टू डू दे यूज टू प्रोटेक्ट द लैंडलॉर्ड्स एंड मनी होल्डर्स के जो लैंडलॉर्ड्स एंड मनी होल्डर्स हैं उनको वो लोग हेल्प करते थे उनके लिए रूल अलग था फार्मर्स के लिए रूल अलग था एंड दैट वॉज टोटल इनजस्टिस राइट दैट इफ रूल्स आर बीन देयर और इफ रूल्स आर बीन क्रिएटेड लेट देम बी इक्वल फॉर फार्मर्स as well as money holders, but that was the injustice which was done on farmer. On many occasions, the farmer rose against this injustice. The peasant in Bengal formed the union and revolt against the compulsion of cultivating indigo. जैसे हम लोग ने पहले देखा that Britishers they made a compulsion rule कि indigo वहाँ पे grow होना ही चाहिए ना अभी उसके लिए वो land बराबर है या नहीं वो कुछ नहीं उनको सिर्फ बताना है that indigo should be grown. The play Neel Darpan, written by Deen Bandhu Mitra, brought to the notice of the society the wretched conditions of the peasant producing indigo. Okay. सो दिस वॉज नील दर्पण एक पूरा ड्रामा लिखा था जिस पे दिखाया जा रहा था कि ये इंडिगो ग्रो करने के कंपल्शन के वजह से फार्मर्स को कौन कौन सी सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है इन 1875 फार्मर्स फ्रॉम महाराष्ट्र रोज इन रिवॉल्ट अगेंस्ट द atrocities of the landlords and money lenders. The farmers in UP formed Kisan Sabha in 1918 under the leadership of Baba Ramchandra. The Mopla peasant rose in great revolts in Kerala, but the British government crushed it down. And लोगों को गुस्सा आ रहा था तो लोगों ने फॉर्म्स बनाने थे यूपी में एक था किसान सभा करके फिर केरला में था सब लोग फॉर्म कर ऑर्गेनाइजेशन वर बीन फॉर्म्ड एंड दे वर रिवॉल्टिंग अगेंस्ट इट बट देन द ब्रिटिशर्स यूज्ड टू ब्रेक देम डाउन. In 1936, with the initiative of Professor N.G. Ranga, the Akhil Bharatiya Kisan Sabha was established. Swami Sahajananda Saraswati was the president of this organization. Okay, तो वापस एक अखिल भारतीय किसान सभा करके organization बनाया गया था and Swami Sahajananda was the president.
The Sabha presented a declaration of peasants' right to the Indian National Congress. The session of the Congress was held in the rural part of Faizpur in Maharashtra. Thousands of people attended this session and यहाँ पे क्या डिस्कस हुआ था ये ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ पे उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ पीजेंट ऐसा दे दिया था. किसको दिया था? नेशनल कांग्रेस को, दैट विच ऑल राइट्स शुड बी गिवन टू पीजेंट्स. वैसा एक पूरा डिक्लेरेशन फॉर्म बना के दे दिया था टू इंडियन नेशनल कांग्रेस. एंड इट वाज लाइक इन दिस ऑर्गेनाइजेशन देयर वाज पीपल, एंड इन दिस मीटिंग देयर वर farmers in a very large number. In 1938, the crops in eastern Khandesh were destroyed due to heavy rains. The condition of the farmers were miserable. In order to get the land revenue waived, Sane Guruji organized meetings and processions at many places. He took out marches on the collector office. The peasants participated in large number in revolutionary period of 1942. ओके कि 38 में क्या हो गया था, बिकॉज अनफेवरेबल कंडीशन, कभी भी बारिश गिर जाता है तो जो क्रॉप्स है वो नहीं अच्छा ग्रो कर पाते. तो अपन फार्मर्स को वैसा कुछ नहीं था कि ठीक है अगर आपका इस बार नहीं हुआ तो आप मत टैक्स पे करो. दे वर बीन फोर्स. सो साने गुरुजी ही केम्ड अप विद मैनी फार्मर्स बिकॉज फार्मर्स का हालत एकदम ख़राब था. द सिचुएशन वॉज वेरी मिजरेबल. And then Sane Guruji, he came up with certain organization and marches so that उनका टैक्स जो भरना है वो माफ़ हो जाए वैसा. Workers' Union. In the later half in 19th century, textile mills, railway companies and such industries were started in India. जैसे हम लोग ने पहले के chapters में देखा, industries were being built, right? The workers group had not aroused on large scale, but in this period, efforts were made to solve the problems of workers. Sashipada Banerjee and Narayan Meghaji Lokhande organized the workers at local level. Lokhande's contribution to the working class movement was so valuable that he is described as father of Indian workers movement. अभी इंडस्ट्रीज तो बन गए थे पर वहाँ पे काम करने के लिए इतने वर्कर्स नहीं थे. एंड व्हाट ब्रिटिशर्स यूज्ड टू डू, वो अपने वो लोग ब्रिटिश वर्कर्स को ही रखते थे एंड उनको ज़्यादा फीस देते थे, पर काम कम करा के लेते थे. एंड हमारे वर्कर्स से काम ज़्यादा करा के पगार कम देते थे. तो सच वॉज द सिचुएशन. सो व्हाट ही डिड, मतलब कौन, शशिपाड़ा बैनर्जी एंड नारायण मेघाजी लोखंडे, उन्होंने क्या किया, जो नॉर्मल वर्कर्स थे लोकल लेवल पे उनको वहाँ पे काम पे लगाया. एंड उनका बेसिक इनकम आने लगा. एंड दैट इज़ वाई ही हैज़ अ ग्रेट नेम इन द फील्ड ऑफ फार्मर्स एंड ही इज़ रिवॉर्डेड एज father of Indian workers movement. Okay. At the same time, an agitation was launched against the wretched condition of tea plantation workers in Assam. In 1899, the Great Indian Peninsular GIP railway workers called for a strike for their demands. During the anti-partition movement, workers carried out strikes from time to time in support of Swadeshi. After the First World War, due to industrialization, there was rise of worker class in India, and then a necessity for nationwide worker union was felt. With this necessity, in 1920, All Indian Trade Unions Congress, that is AITUC, was established. And M. Joshi had a major role in the working of AITUC. Lala Lajpat Rai was the president of the first session of AITUC, and he told the workers to actively participate in the national movement. तो अभी तो हम लोग ने farmers का देख लिया because उनका situation was worse because there was not a proper growth of crops. The same situation was of Assam. के आसाम में भी जो टी प्लांटेशन था वो अच्छे से नहीं हो रहा था. तो even there people they came out with different organization and they decided to went on strike. अभी कैसे हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, because they always supported स्वदेशी, कि उनको ऐसा था कि हमारा जो खुद के कंट्री का गुड्स है या खुद के कंट्री का प्रोडक्शन है वो भी होना चाहिए वैसा. एंड एट द सेम टाइम आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडस्ट्रीज़ बनी थी. अब इंडस्ट्रीज़ बनी है तो उसके अंदर काम करने के लिए वर्कर्स भी चाहिए, राइट. सो वर्कर्स को वर्कर्स को AITUC एक कांग्रेस, ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस इस्टेब्लिश किया गया था. क्यों कि दे यूज्ड टू सी के वर्कर्स को अच्छे से काम पे लगाया जा रहा है या नहीं, ऑल द प्रॉपर नीड्स ऑफ वर्कर्स आर बीइंग फुलफिल्ड एंड नॉट, एंड ये सब काम वो देखा जाता था. एंड ही टोल्ड लाला लाजपत राय
ये जो सेशन बनाया था AITUC का, उनके वो हेड थे. एंड ही टोल्ड द वर्कर्स टू एक्टिवली पार्टिसिपेशन इन द नेशनल मूवमेंट, के जो नेशनल मूवमेंट होता है उसमें भी आप अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट करते जाओ वैसा. श्रीपद अमृत दंगे, मुजफ्फर अहमद, सच सोशलिस्ट लीडर्स बाय स्प्रेडिंग द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी अमॉन्ग द वर्कर्स वर्क टू फॉर्म मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस. ओके, कि ये सारे लोग उनको हेल्प कर रहे थे क्या, कि एक ऑर्गेनाइजेशन आप भी बनाओ वर्कर्स के लिए. बिकॉज सी, ये लोग जितना हेल्प कर सकते उतना कर सकते हैं, बट लेटर ऑन दे ओनली हैव टू फाइट फॉर देयर राइट्स, राइट. In 1928, the Mumbai Mill Worker Union went on strike for 6 months. अभी क्या एक हमारे पास अच्छा ऑप्शन था कि वी कैन सिलेक्ट टू गो ऑन स्ट्राइक्स. बिकॉज कैसा होता था, स्ट्राइक पे गए तो इंडियन वर्कर्स जो स्ट्राइक पे चल रहे थे तो ब्रिटिश वर्कर्स को ही पूरा काम करना पड़ता था, एंड वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगता था. सो फिर वो लोग कुछ उसके ऊपर डिसीजन लेते थे. तो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद द वर्कर्स वॉज गोइंग ऑन टू स्ट्राइक्स, एंड नॉट फॉर लाइक 2 days or 3 days, बट इफ़ यू गो ऑन लाइक फॉर अ स्ट्रेच ऑफ 6 months, देन पूरा काम अटक जाता है. एंड देन द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडरस्टैंड द सिचुएशन, एंड देन दे कम अप विथ सम रिजल्ट्स. The government was disturbed to see the growing strength of workers' movement. To suppress this movement, legislations were made. The workers' struggle proved to be a supportive to the नेशनल मूवमेंट. कि अभी ब्रिटिशर्स को भी थोड़ा डर लगने लगा कि यार ये लोग तो बढ़ते ही जा रहे हैं, इनका यूनिटी तो एक ही होता जा रहा है. एंड देन ही मेड सर्टेन लेजिस्लेशंस, बट देन दिस वर्कर मूवमेंट वाज अ ग्रेट सक्सेस फॉर नेशनल मूवमेंट. कि जो हमारा नेशनल मूवमेंट है उसके लिए ये वर्कर्स लोगों का साथ में आना एंड टू फॉर्म अ यूनिटी वाज अ ग्रेट सक्सेस. Socialist movement. Many of the young activists in the Indian National Congress felt that for protecting the interest of people, it is necessary to overthrow the British government. Similarly, they started realizing that the society should be restructured on the principle of economic and social equality. Through this realization, there was rise and growth of socialist ideology. कि अभी लोगों को पता चल रहा था कि हम लोग को इनइक्वली ट्रीट किया जा रहा है, किससे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से. So that is why throwing them out is a major priority right now. And then एक वापस से एक सोसाइटी ऐसी बननी चाहिए जहाँ पे the rules, the laws are equal for each and every one. वैसे the socialist youth, while they were in prison at Nasik, decided to form the Socialist Party within the Indian National Congress. And फिर लोगों को पता चलने लगा कि एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी होना ज़रूरी है, एंड फिर लोग साथ में आने लगे. तो जो नासिक का ग्रुप था, दे स्टार्टेड मेकिंग अ सोशलिस्ट पार्टी. इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही उन्होंने एक सोशलिस्ट पार्टी बनाई कि जो सारे सोशल इश्यूज़ को उनके ऊपर वो डिस्कस करे वैसा. अकॉर्डिंग टू दिस डिसीजन इन 1934, the Congress Socialist Party was formed, which include leaders like Acharya Narendra Dev, Jai Prakash Narayan, Minnu Masani, Dr. Ram Manohar Lohia, etc. In Quit India movement of 1942, this young socialists were in the forefront कि इन्होंने अपना बड़ा contribution दिया. You can see the pictures over there. Indians got introduced to Karl Marx and his communism. Lokmanya Tilak had already written an article on Marx in 1881. After First World War, the influence of communism was felt in India. Manav Vendranath Roy played active role in the international communist movement. Okay. नाउ अभी लोगों को किसका थियोरी पता चलने लगा, कार्ल मार्क्स का थियोरी. कार्ल मार्क्स का बेसिक थियोरी बच्चा लोग आप लोगों को पता है. इट इज़ ही ऑलवेज बिलीव दैट देयर शुड बी नो इकोनॉमिक क्लास. ओके, वेज वर्कर्स हो गए, लैंड ओनर्स हो गए, एक्सेट्रा, दे शुड हैव द पावर ओवर वन अनदर. कि कोई उनको हैंडल करने के लिए नहीं होना चाहिए, उनके खुद के अंदर ही पावर होना चाहिए. एंड ही ऑलवेज बिलीव दैट एवरी वन शुड कॉन्ट्रीब्यूट वॉट दे कैन एंड एवरी वन शुड गेट वॉट दे नीड. दिस वॉज द बेसिक idea of Karl Marx theory, right? उनका theory basically क्या था, he always believe in labor theory. Okay, ये उनका थियोरी है, बेसिक थियोरी. सो नाउ पीपल गॉट टू नो अबाउट कार्ल मार्क्स थियोरी, एंड इवन लोकमान्य तिलक उन्होंने भी एक आर्टिकल लिखा था. तो नाउ पीपल वर नाउ इन्फ्लुएंस बाय दिस थियोरी, एंड देन दे स्टार्टेड इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट. ओके, मानव वेंद्रनाथ रॉय उन्होंने स्टार्ट किया था. इन 1925 द कम्युनिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन इंडिया. द वर्किंग ऑफ बिल्डिंग मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स एंड पीसेंट वॉज डन बाय द
young communists. The British government started feeling the danger of communist movement, कि अभी कम्युनिस्ट पार्टी आ गया था, एंड उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जिसमें वर्कर्स एंड पीसेंट एक साथ हो एंड उनसे रिलेटेड जो सारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो. सो नाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज इन टू टेंशन एंड इन डेंजर. श्रीपद अमृत दंगे, मुजाफर अहमद, केशव नीलखंड जोगलेकर एक्सेट्रा वर ऑल अरेस्टेड. जो मेन लीडर्स थे उनको ब्रिटिश अरेस्ट कर रहे थे, सो दैट लीडर अगर अरेस्ट हो गया तो पीपल जो उनके फॉलोवर्स है वो वीक हो जाए. ये उनका बेसिक लॉजिक है ब्रिटिशर्स का. दे ऑलवेज डिड दिस. They were charged with planning of a conspiracy to overthrow the British rule. They were given different punishments. The trial took place at Meerut and is therefore known as Meerut conspiracy case. Even after the Meerut trial, the influence of communist workers movement remained constant. के arrest किया कुछ भी किया, but now people were not worried or not scared of anyone. उनको पता था कि यही उनका policy है, तो उनको arrest कर दिया, different punishments भी दी, किसके अंडर कि आप हमारे गवर्नमेंट के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी रच रहे हो, यू नो, यू आर मेकिंग अ कॉन्स्पिरेसी, एंड उस चार्ज के अंदर वो लोग उनको अरेस्ट कर देते थे. बट नाउ पीपल वर नॉट वरिड. अगर लीडर्स अरेस्ट भी हो गए तो भी पीपल जो फॉलोवर्स थे दे वर कांस्टेंट एंड द मूवमेंट वाज कांस्टेंट. Feminist movement. In the Indian social system, women were given secondary position. Due to many evil practices, they were subjected to injustice. But during the modern period, there was an awakening against it. Some of the male reformers took initiative in the reform movement related to women. In the course of time, women leaders started coming forward. The Independent Institute organization came to be established. कि हर बार women को देखा जाए तो second position दिया जाता था. So there were many reformations which were being done so that women should get equal laws and rules and सब. तो जो मेल रिफॉर्मर्स थे वो कोई आए हेल्प करने के लिए, एंड स्पेशल वुमेन लोगों के लिए देयर वर ऑर्गेनाइजेशन विच वर बीन एस्टैब्लिश्ड. Pandita Ramabai established the Arya Mahila Samaj and Sharda Sadan. Similarly, Seva Sadan founded by Ramabai Ranade are examples of this. Bharat Mahila Parishad and All Indian Women's Conference were founded as well. So all of these are the organizations which were being specially made for women. Therefore, this institutional work reached at the national level. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बन रहा था, काम अच्छे से चल रहा था, तो ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन का वर्क नेशनल लेवल तक पहुंचने लगा. For the issues such as right to inheritance, right to vote, etc., women too had to struggle through the medium of this organization. कि पहले इतना राइट्स नहीं होता था वुमेन को जितना आज मिलता है. तो बेसिक राइट्स लाइक एक राइट होना चाहिए वोट करने के लिए, काम, यू नो, राइट टू इनहेरिटेंस, बेसिक राइट्स के लिए भी उनको उस टाइम पे फाइट करना पड़ता था. Rakhmabai Janardhan Save was the first practicing woman doctor in India. She delivered series of lectures related to health issues of women. She also opened a branch of Red Cross Society at Rajkot. Okay, so she was the first one woman who practiced doctor का सब पढ़ाई वैसे, and she also created Red Cross Society Rajkot में, so that it could help some like ladies who want to learn doctory and something like that. During the 20th century, participation of women in public life began to increase. Women's participation in the national movement and revolutionary work was significant. After the Act of 1935, women were included in the provisional ministries as well. After independence, the principle of equality of men and women had been clearly stated in the Constitution of India. So अभी क्या हो रहा था, ऑर्गेनाइजेशन बन रहे थे तो पार्टिसिपेशन बढ़ रहा था वुमेन का. हर कोई मूवमेंट में वुमेन्स भी इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे थे. एंड आफ्टरवर्ड्स तो हमको पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है that there should be equal law for women as well, and both of them should be treated equally. Dalit movement. The Indian social structure was based on inequality, as we all know. पहले ब्राह्मण, then फिर ये सब जो ये किया गया है,
वो पूरा उनका जो स्ट्रक्चर था वही पूरा इनइक्वालिटी पे बेस्ड था. So social reformers like Mahatma Jyotirao Phule, Narayan Guru brought up awakening of the people against the unjust treatment given to Dalits in the society. के जो दलित्स है उनको एकदम लोअर कास्ट पे दिया जाता है and एकदम treatment was not properly done to them. So many reformers they came up and they said कि ये लोग भी इंसानी है and इनको भी equally treat करना चाहिए. Following the teachings of Mahatma Phule, Gopal Baba Valankar and Shivram Janba Kamble worked for the eradication of untouchability in his book and worked for the eradication of untouchability. Okay, तो उन्होंने all of these people they worked for untouchability, मतलब क्या वो अछूत जैसा मानते थे वो बंद करना स्टार्ट किया उन्होंने. In 1888 Gopal Baba Valankar in his book Vittal Vidwansan condemned untouchability. Shivrao Janba Kamble started the magazine Soma Vanshiya Mitra on 1st July 1908. He raised voice regarding issues of moralities and joke things. He also took initiative for marriages of Devadasis. In Tamil Nadu, Periyar Ramaswamy started a movement for eradication of untouchability. तो बेसिकली इन्होंने बुक्स लिखा, मैगजीन्स लिखा एंड उसमें लोगों को बताया कि ऐसा कुछ है नहीं एंड दे टॉक्ड अबाउट अनटचेबिलिटी एंड एराडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी कि इसको कैसे हम एराडिकेट कर सकें. In 1906, Maharshi Vittal Ramji Shinde started the Depressed Class Mission for the Progress of Dalits. The important part of their work was to make the Dalits self-respect, well educated and engaged in the work, while the second part of their work was to destroy the delusive ideas regarding Dalits in the mind of upper caste. तो ये इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि मेन तो जो दलित्स है उनको इक्वल जॉब दिया जाए, इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव ये था कि जो अपर क्लास को लगता है दलित्स के बारे में उनका जो थिंकिंग है वो चेंज किया जाए. For this purpose, he founded Marathi schools, work schools in part of Parel, Deonar in Mumbai. He actively took part for the benefits of Dalit class regarding Satyagraha, for entry in Parvati Temple at Pune, Shetkari Parishad of Dalits, Federal Electoral, etc. There were बहुत बुरी तरीके से इनको ट्रीट किया जाता था. कोई टेम्पल्स में इनको अलाउड नहीं किया जाता था, बोलते आप अछूत हो, आप नहीं आ सकते हो. तो ये सारे चीज़ों के लिए रिफॉर्मर्स ने फाइट किया एंड हर एक टॉपिक में से दलित्स को बाहर लाया. Rajashri Shahu gave support to the leadership of Dr. Babasaheb Ambedkar. During his period, he led the non-Brahmin movement. Rajashri Shahu Maharaj made revolutionary declaration for the reservation in state of कोल्हापुर का. उन्होंने कोल्हापुर में जो ये सारे लोगों के लिए जो प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए उन्होंने फाइट किया. He made a law for free and compulsory primary education कि उनको free and compulsory education मिलना चाहिए no matter what. Okay, he did substantial work for abolition of caste discrimination. There were 3 restrictions put up in the caste system: interdining, intermarriage and change of occupation. In this regards, during meeting and conferences, Shahu Maharaj ate food from the hands of Dalit and overthrew the restriction on interdining. Okay, ये 3 चीज़ों पे मेन तो होता था. इंटरडाइनिंग मतलब क्या कि आप दलित के हाथ का खाना मत खाओ और ये सब मत करो. तो ये जो थे राजश्री शाहू महाराज उन्होंने ये फर्स्ट रूल ब्रेक किया. उन्होंने दलित के हाथ से खाना खाया एंड देन ही सेड कुछ नहीं होता है, नॉर्मली है. एंड फिर उन्होंने ये इंटरडाइनिंग वाला फर्स्ट रूल ब्रेक किया. इंटरमैरिज, Shahu Maharaj believed that till the restriction on intermarriage is followed, till then the caste distinction will not be uprooted. He passed the act of intercaste marriage and gave it a legal exception in his state. Okay, तो उन्होंने वो law को ही pass कर दिया. He was like, now it is okay, you can, intercaste marriages are allowed in that particular state. On 22nd February 1980, he abolished the Baluti system by publishing a declaration in the government gadget of the state of Kolhapur. Okay, तो जो Baluti system था, now what is Baluti system? I'll let you know. 1 second. It was basically a system which used to work like मतलब एक कैसे होता था बालूते. there is basically system of 12 trades. Okay, like
the Balutidars, they used to get paid for the services they did for the village, producing under a like a barter system वैसा. तो ये जो बालूतीदार system था, he also published a declaration in the government gadget of the state of कोल्हापुर के वहाँ पे भी उन्होंने वो चालू किया वैसा. Permission was granted to practice any occupation by anyone. By giving freedom of occupation by Shahu Maharaj, the people were freed from a type of social slavery. That what used to happen वैसे था कि particular caste वाले ये occupation को select कर सकते थे. But later on, Rajashri Shahu Maharaj, what he did, he gave freedom of occupation, that no matter which caste you belong to, you can occupy or you can do any occupation, and that is where people got freedom, that they can do anything which they want. And एक slavery नहीं था कि किसी के अंडर काम करना नहीं पड़ता था वैसे. The Socialist Party did valuable work for social equality in South Indian. Mahatma Gandhi took up the issue of eradication of untouchability in his hand and put it up on the platform of Indian National Congress. Then even Mahatma Gandhi ji, he contributed, he came up with this point in Indian National Congress. While at Yerwada prison, he debated with the rigid Hindu Pandits, stating that the religious texts of Hindus do not support untouchability. So he even had an argument with some Pandits who used to say that no, in our books it is said that these people are untouchability and इनको नहीं. तो उन्होंने उनसे भी बराबर डिबेट किया कि no, all are equal. He gave inspiration to Harijan Sevak Sangh. By taking inspiration from him, Amrutlal Vithaldas Thakkar, alias Thakkar Bappa, Appa Sahib Patwardhan, etc., these activists dedicatedly work for equality. के उनसे इन्फ्लुएंस होकर बहुत सारे लोग ने इक्वालिटी के लिए भी काम करना स्टार्ट किया. The struggles of the Dalits began under the leadership of Dr. Baba Sahib Ambedkar. सबको ये पता है, right? He aimed at establish a society based on principle of liberty, equality and fraternity. कि उनका पहले से ही मानना था कि एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहिए जहाँ पे सब इक्वल हो एंड किधर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. He was convinced that the injustice to the Dalits and inequality would not end unless the caste system was completely uprooted. According to him, social equalities was the right to the Dalits. He intended to carry out a movement based on self-respect. From this point of view, he established the Bahishkrut Hitkarni Sabha in July 1924. Be educated, be organized and be agitated was the inspirational message given to him to his followers. That he at that time knew that ये injustice कब तक stop नहीं होगा जब तक caste system खत्म नहीं होगा, because caste system के थ्रू फिर पता चलता है ना कौन lower है and कौन upper है. So उन्होंने फिर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, एक सभा ऑर्गेनाइज की थी, बहिष्कृत हितकर्नी सभा, जहाँ पे उन्होंने लोगों को बोला कि आप खुद से इंडिपेंडेंट रहो, आप ऑर्गेनाइज्ड रहो, आप खुद से एजुकेशन लो, सो दैट यू नेवर डिपेंड ऑन एनीवन एंड देन यू आर फ्री वैसा. बाबा साहेब बोले गॉट अ बिल पास्ड इन द बॉम्बे प्रोविंशियल असेंबली फॉर द पब्लिक वाटर reservoirs to open to the untouchable. फिर बाबा साहेब बोले he also worked for people के जो public waters थे, they were not like उनका facility ये दलित्स को नहीं दिया जा रहा था. तो he came up with that and he said that everyone would get this opportunity of using water reservoirs. However, in reality, the water reservoirs were not accessible to the Dalits, and hence Dr. Baba Sahib Ambedkar and his followers started satyagraha at 14 Lake in Mahad. कि उन्होंने बोल तो दिया था, ये रूल पास भी कर लिया था, बट स्टिल उनको Dalits ko they weren't given permission to use water reservoirs. And then when Baba Sahib Ambedkar got to know about this, he did a satyagraha at that particular lake in Mahad. He also burned the Manusmriti which advocated inequality. In 1930, he started satyagraha for the entry of Dalits in the Kalaram temple at Nasik. फिर उन्होंने जो, as I said you all earlier, firstly they were not allowed to go to particular temples, but फिर एक नासिक का जो कालाराम टेम्पल था उनमें भी उन्होंने एंट्री करने के लिए सत्याग्रह स्टार्ट किया था. दिस सत्याग्रह वॉज लेड बाय करमवीर दादा साहेब गायकवाड़. Newspaper was an integral part of Dr. Baba Sahib Ambedkar movement. To create awakening in the society and to voice out their grief, Dr. Baba Sahib Ambedkar started newspaper like Muknayak, Bahishkrut Bharat, Janta, Samata, etc. Always, as I said, to always inspire people or to write anything what he has in his mind.
so that people could get to know about it, he started writing newspapers so that people get to know what are his points of view, and then there is a mode of communication. So he wrote certain newspapers. Some of them were Samata and Janta. Dr. Babasaheb Ambedkar established the Independent Labour Party. He opposed the laws that went against the interest of workers. के जो workers के against laws जा रहे थे उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया. In 1942, he established All Indian Scheduled Caste Federation to put forth the issues of Dalit in an effective manner. Through the Constitution of India, Dr. Babasaheb Ambedkar made a significant contribution to the creation of a social structure based on equality in modern India. As we all know, Constitution में he has clearly said that everyone have a equal right no matter what. In 1956, along with his innumerable followers, he embraced Buddhism that advocated humanity and equality. He also supported Buddhism because उनका भी main rule क्या था? Humanity and equality. The struggle for equality has a prominent position in the making of मॉडर्न इंडिया के. एक जो स्ट्रगल था इक्वालिटी का, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा था. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ अ चैप्टर टू यू, बिकॉज देयर वर मेनी मूवमेंट्स विच वर बीइंग रेज्ड, एंड पीपल यूज्ड टू लिटरली फाइट फॉर थिंग्स विच वी हैव नाउ. सो वी शुड ऑलवेज बी ब्लेस्ड दैट we have all the rights and we don't have to create organization and movement for such things. Okay, that is how we come towards the end of our chapter. As I always say, the exercise part would be something which you will do by yourself. So yeah, that was it for today's session. We'll see you all in the next one. Till then, bye bye and take care. Bye.